A very good morning to all my class 10th students. I am here explaining the chapter Manufacturing Industries, and we were continuing with the factors responsible for the growth of manufacturing industries, and today I'll be covering agro-based industries, different agro-based industries. Now, talking about the location of industries, you have to very much understand them, because I will also make you mark these industries on the map. The map work is very important for the location of industries, especially states where the industries are located, and the reasons why industries are located over there. So these 2-3 points are very important for us to discuss while discussing the cotton textile industry, or while discussing the jute industry, or while discussing any industry. So let's begin. We will give the topic agro-based industries. What is agro-based industries? Agro-based industry normally means industries that are dependent on agriculture for their raw materials. These are known as agro-based. Their base is agriculture. So in this, the first industry is cotton industry. You know, cotton industry is a very important industry for the production of cotton clothes. Okay, cotton clothes are very much produced in India, and the demand of cotton is too much in India, and also Indian cotton is exported to foreign countries. There are two varieties of cotton known as खद्दर. हम कभी भी लेते हैं, अपने मदर एंड फादर से पूछेंगे तो हमें कहा जाता है खद्दर की चादर ले ली हमने. खद्दर मीन्स that chadar, that blanket, or that bed sheet is having a blend of refined cotton. Okay, so cotton is used for as a khaddar for different processes, and also cotton sarees, very popular, cotton suits, cotton shirts, cotton pants, different ways cotton is used. So cotton is an important aspect, a cotton industry as an important aspect for making the clothes, cotton clothes. The beginning of cotton industry in India could be traced down to 1818 AD. 1818 AD was the year 1818 when cotton industry got it set up in India. And today Mumbai and Ahmedabad are the chief centers of cotton. There has been a shift from Mumbai to Ahmedabad in Gujarat, but Mumbai has been a great center of cotton. So the major cotton producing industries states are Gujarat, Maharashtra, Mumbai and Ahmedabad are the two centers. Other important centers are Kanpur in Uttar Pradesh, Coimbatore, Nagpur, that I will give you. India exports cottons to the mills of USA, England, European and African countries, Nepal, Sri Lanka and Singapore. So cotton, an important agro-based crop. Cotton is an important revenue earner, and cotton is important crop for producing clothes in India. So this was cotton for you. So 1818 it began. There are number of cotton industries. There are around 1600 cotton industries in India presently. I am sharing you the notes also. So 1600 cotton industries are presently present in India. The chief centers of cotton are Mumbai and Ahmedabad. Now, अब मुंबई से अहमदाबाद क्यों हुआ है शिफ्ट? फर्स्ट रीजन, अहमदाबाद क्यों डेवलप हुआ है ज़्यादा, और मुंबई से शिफ्ट क्यों हो रहा है? अहमदाबाद लैंड इज चीप. कोई भी इंडस्ट्री लगाने के लिए मैंने तुमको क्या कहा था? चीप लैंड. मुंबई में ज़मीन के रेट बहुत हाई, तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं. ठीक, अहमदाबाद में द रेट्स आर क्वाइट लो. लेबर, cheap labor available in Ahmedabad rather than Mumbai. ठीक,
Pollution level in Mumbai is more, pollution level in Ahmedabad is less, and the population and the traffic jams in Mumbai are more and they are less in Ahmedabad. Obviously the industry always shifts to where it can save. इकोनॉमी जहाँ पे हो सकती है, जहाँ पे पैसे की बचत हो सकती है, वहीं पे इंडस्ट्री शिफ्ट करती है हमेशा. सेकेंड इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री, नहीं, बिफोर दैट आई विल गिव यू सम ऑफ द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द कॉटन इंडस्ट्री. अब कॉटन इंडस्ट्री के सामने मेजर प्रॉब्लम्स क्या है? ओके, कोई भी इंडस्ट्री होगी उसको सर्वाइवल के लिए कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने होंगे. द फर्स्ट प्रॉब्लम है आउटडेटेड टेक्नोलॉजी. नई नई मशीन्स नहीं है. नई मशीन्स रिफाइंड कॉटन प्रोड्यूस करने के लिए, जल्दी कॉटन प्रोड्यूस करने के लिए, कॉटन को बेटरमेंट के लिए नहीं है इंडिया में. तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नीड्स टू कम. टेक्नोलॉजी ड्रॉबैक इज देयर इन द cotton industry, due to which the cotton industry is suffering. Second important point that cotton industry needs is mills are old and shabby structures. पुराने ज़माने की कॉटन मिलें हैं, पुराने तरीके से लोग काम कर रहे हैं, बुजुर्ग लोग हैं, अपडेटेड काम नहीं हो रहा, अनएम्प्लॉयमेंट है, सस्ते सस्ते वर्कर लगा रखे हैं. तो उस तरीके का प्रोडक्शन का लेवल आ नहीं रहा, उस तरीके का प्रोडक्शन का कंट्रोल नहीं आ रहा, और एक तरीके से कह दें तो काम करने में मज़ा नहीं आ रहा. पुरानी पुरानी वो सीटी बजाती हुई मिलें हैं. दे आर नॉट न्यू मिल्स लाइक वी सी इन कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन नेशंस और इन अमेरिका, चाइना. सो द मिल्स हैव ओल्ड स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब है, अच्छी हाइजीन नहीं है वहाँ पे, अच्छी क्वालिटी ऑफ वर्क नहीं है. फीमेल वर्कर्स के लिए भी प्रॉब्लम है, दे कैन नॉट वर्क, गंदगी बहुत है. तो इस तरीके की चीज़ें काफ़ी है वहाँ पे. तो दीज आर टू मेजर प्रॉब्लम्स. थर्ड इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम दैट कम्स फॉर द कॉटन इंडस्ट्री इज़ द क्वालिटी ऑफ कॉटन. अब क्वालिटी ऑफ कॉटन ओवर द ईयर्स गिरा है. प्रोड्यूस तो बढ़ा है लेकिन क्वालिटी गिरी. So we need to update the quality. Quality of cotton. If the quality of cotton will not be good, then the the export will fall down. The quality will fall down. The clothes quality will fall down. And if the clothes quality will fall down, the purchase will go down. So one of the major problems that cotton industry is suffering from the, they have adequate produce. बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस तो कर रहे हैं, शॉर्टेज नहीं है, लेकिन बल्क में जो प्रोड्यूस हो रहा है क्वालिटी भी नहीं है. अब द बिकॉज ऑफ द लेस क्वालिटी, लो क्वालिटी कॉटन प्रोड्यूस, द कॉटन मिल्स आर सफरिंग फ्रॉम मेजर प्रॉब्लम्स. एंड उस तरीके से उनको प्रॉफिट अर्न नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सस्ता माल है, सस्ते में जा रहा है, तो ब्रांड्स उसको ले नहीं पा रहे. तो ये मेजर प्रॉब्लम्स हैं कॉटन इंडस्ट्रीज के. जो अगेन आई वुड बी सेइंग इन दिस पार्ट यू हैव टू बी वेरी वेरी पंक्चुअल विद द मैप वर्क, बिकॉज इट इज़ द मैप वर्क दैट इज एक्सट्रीमली important for the location of manufacturing industries. They will ask you where are the major industries, cotton industries located in India. So you have to mark Ahmedabad, Mumbai, Kanpur, Coimbatore. This I will make you practice. So then I will tell you the number of cotton things, that different types of cotton I have told. Khaddar is used and it is for saris. Another thing is used. So this completes, I guess, your cotton. Cotton is over. I'll be sharing you the notes of cotton, and in the next video we'll be beginning with jute industry. Okay. Now what I am teaching you, I'm teaching you the facts of it. These chapters mostly have facts that you have to learn. Okay. So start cramming them. This is the cramming part. The part of globalization, the part of economy, the part of anything that was not to be crammed, that was to be understood. But this needs to be crammed. Okay. So start cramming it also. Sometimes cramming is also important. Normally I don't refer cramming, but today I am referring cramming. Okay. So I hope you enjoyed the video, and we'll be meeting
in the next video very shortly.